morning. Thank you for coming to TRIHMS. I'm Dr. Inchin Megaji, President, TRIHMS Faculty Association. Beside me is Dr. Mingam Pertin, General Secretary, Indian Medical Association, and Dr. Mulong, Executive Member of Arunachal Pradesh Doctor Association. It is rather a very sad day in the history of medical fraternity of Arunachal Pradesh because it's an attack on the most polished, accomplished medical fatherly figure, Dr. Moji Jini, who is at present the Director of TRIHMS. Sadly, what has occurred is the issue of the office has become a personal agenda which has led to this altercation. But through the media and through your people, we would like to make it very clear that violence in any form is not good, and we all agree to that, and law enforcements have been placed accordingly. We strongly condemn the attack, the heinous act. Also, we stand in solidarity and support of Dr. Moji Jini. Dr. Moji Jini is one of the finest gentlemen and human being that we all have come across. And it is because of his vision that we have a medical college here today. And the students that you see behind are our own students, our own flesh and blood, who have got the opportunity to study in a place that we call our own. We, unfortunately, during our times had to study outside, have gone through a lot of hardships that it's not narratable in a few seconds or hours or days. Secondly, we want to request the government to amend the Arunachal Pradesh Medical Service Personnel and Medical Service Institutions Act 2019. In that, there is no provision of any punishment if an incident occurs outside the hospital premises, that is at home. And we want that the severity of punishment should be taken into accordance. Thirdly, we also appeal to the government of Arunachal Pradesh that this issue is now out of the gambit of TRIHMS, and they should come forward and solve the issue for once and for all, so that we have a peaceful existence. Something like this has never occurred in Arunachal Pradesh before, and we would request the whole public of Arunachal Pradesh, whoever is seeing this, that such things are uncalled for and should never be repeated, in the best interest of the people, of the doctors and of the citizens of Arunachal Pradesh. Thank you. Now I request Dr. Mingam Pertin, General Secretary, Indian Medical Association, to pass on his message. Good morning, everyone. Thank you so much, the media fraternity, for taking out your time and to attend this silent protest. Me, Dr. Mingam Pertin, the General Secretary of the Indian Medical Association, which is the umbrella body of all like the doctors, whether private or government service doctors. So we, the Indian Medical Association, stand in solidarity with Dr. Moji Jini, Director of TRIHMS, who is like a father figure to all of us. Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. Professionals and all services health services that are of belong to Arunachal Pradesh, and an act of such an act is totally condemnable. हम इसे कड़ी से कड़ी शब्दों में हम इसका निंदा करते हैं, जो कि एक जो ऑफिस वाला जो आपका जो प्रोफेशनल जो वर्क है, वो रिलेटेड जो है उनका पर्सनल उनको अटैक हुआ है, तो इसीलिए हम लोग सब दुखी है इसके लिए। और हम ये ट्रिम्स फैकल्टी एसोसिएशन के साथ है, और हमें सारा जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ हम जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन साथ है। और हम लोग इनका जो TFA का जो डिमांड है, उनका जो कि जो ये गवर्नमेंट लेवल में
जितना जो ये लेवल जो है अभी पहले इसका जो है जो जस्टिस जो है इसको ये ट्रिम्स लेवल से अभी से बहुत बाहर हो गया है, से ऊपर उठ चुका है अभी। तो हमें दरख्वास्त करेंगे कि हमारा जो ये जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है तो उनको हमें दरख्वास्त करेंगे अभी कि इसे अपने लेवल में इसे इसके सॉल्व करने की कोशिश करें। और कोई भी वायलेंस हो, छोटा हो बड़ा हो, वायलेंस इज वायलेंस, तो उसको जो जो उचित जो जो सेक्शंस में उनको जो जो भी हो जो कल्प्रिट हो उसको पनिश किया जाए। और हम इसी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो पेमा खांडू लेड गवर्नमेंट को हम लोग आभार व्यक्त भी करते हैं कि जो 2019 में जो हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में जो है मुहिम ये किया था कि जो इस एक्ट के लिए जो अरुणाचल प्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकल सर्विस पर्सनल्स एंड मेडिकल सर्विस इंस्टीट्यूशंस एक्ट जो 2019 में उन्होंने इसको ये किया गैजेट नोटिफिकेशन करा के इनको तो उसको जो अमेंडमेंट किया जाए, जिन्होंने बोला कि जो सर्विस पर्सनल्स का जो या सर्विस जो वर्क प्लेस में होता है तो उससे अमेंड करके ये उस वर्क रिलेटेड हो, तो वो अगर घर पे भी या पब्लिक प्लेस पे भी अगर ऐसा हो तो उसको जरूर इस एक्ट को उसको वहाँ पे वो भी वैलिड होना है, इसको अमेंड जरूर करें। तो इसी के साथ में मैं सभी जो सिविल सोसाइटीज़ है, सारा जो पब्लिक है, आप लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आज का प्रोटेस्ट जो है एक साइलेंट प्रोटेस्ट है। आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे आज एक भी स्लोगन भी नहीं किया, ना हमने रैली किया, ना कुछ नहीं किया। बस हम एक साइलेंट मैसेज पहुँचाना चाह रहे थे कि हम डॉक्टर्स जो है आपकी सेवा के लिए हैं, कुछ भी हो जो सेवा करने के लिए आपके हैं उनको जो उनका अपनी इज्जत जो है उसको आप लोग रखें। और इस तरह के जो पर्सनल पे आप जैसे लेते हैं इस ना लें। और हम कोई भी हो लाइक कोई भी जो कि इस तरह का जो वायलेंस करते हैं उसके हम लोग खिलाफ है। और हम चाहते हैं कि आप सिविल सोसाइटीज आपके सारा जो क्लाइंट्स वगैरह भी आप भी इसको पर्सनल ना लें, इसको आप लोग एकदम बहुत मैच्योर वे में आप लोग इसको लें। और अगर हो सके तो घर से ही शुरुआत होता है अच्छा चीज़, क्योंकि आप अगर घर पे अगर हम लोग अच्छी चीज़ बोलेंगे तब ना जाके वो जो सोसाइटी में वो इम्पैक्ट करता है। तो हम ये दरख्वास्त करेंगे कि जो सारा सोसाइटी वालों को कि आज का जो हमारा साइलेंट प्रोटेस्ट है इसको हम लोग को सपोर्ट करें। और जो हम लोग का जो डॉक्टर्स के बीच में जो हम लोग का जो तकलीफ जो है, जो आप लोगों को सर्विस करने के दौरान हम लोगों को जो तकलीफ भी मिलता है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। थैंक यू। इसका मेन रीजन था जो आप लोगों का लैंड कॉम्पेंसेशन के ऊपर पास्ट 1 ईयर आई एम नॉट रॉन्ग अटका हुआ था सर। तो डोंट यू थिंक कि यहाँ पर ट्रिम्स का भी कुछ गलत ही नहीं बोलेंगे अवॉइडेंस? इसको जो हमारे TFA के प्रेसिडेंट बोलेंगे। You see, we totally agree that obviously there has been some issue, but the point here is not that. और मैं आप सबको ये क्लियरली बता देना चाहिए पॉइंट ये हम लोग वो पॉइंट को लेके आए ही नहीं। हम लोग का इशू ये है कि आप पर्सनली किसी को आई डोंट थिंक इन एनी सोसाइटी इन एनी लॉ अबाइडिंग जगह में आई डोंट थिंक इट्स अलाउड कि आप पर्सनली किसी को अटैक करें। तो हम लोग इसलिए आप बैनर भी आपने देखा होगा कि हैव रिटन इन ट्रिम्स बिकॉज ये ट्रिम्स का इशू है विच हैज़ बीन मेड पर्सनल, सो वी रिक्वेस्ट कि ऐसा ना हो। एंड रिगार्डिंग कंपनसेशन आई थिंक obviously we are not the right person to answer, but issues are going on I think which I heard that a committee has been set up also and they are looking into it. तो इसमें to take it as a personal agenda and to kind of ransack his home, so I think that was quite uncalled for. So that's what we want to put the point here. Structure was dismantled yesterday. We spoke with the under president. He said that the structure was dismantled without his permission and all of things added to it. Yeah, you see, there'll be a lot of like issues. There are a lot of portrayals of what has been happened. Obviously, since we are not from the administration, but having said all these things, we totally agree that there must
have been issues, but then what we are here for today is not that again. We have nothing against who has done it, what has been happening. Our point is very clear. We don't want, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कभी और मेडिकल हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश में रिपीट हो. स्पेशली आप अगर काम का एजेंडा को लेके उसको पर्सनल बना के अगर कहीं और जाके उसको निपटाने का कोशिश करते हैं, आई थिंक दैट इज अनकॉल्ड फॉर. हम लोग का पॉइंट यही है. So yesterday, मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है. जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर.